fraudulent activities by private hospitals under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana or ABPMJ, a Modi government flagship insurance scheme, may not be unique only to Chhattisgarh. Yet, what is astonishing is its scale in the largely tribal state, ranked 17th by population but at number 6 in India for total admission under the program. Recently, the state government launched a crackdown on for-profit hospitals identified for carrying out fraudulent transactions under the scheme that is meant for providing cashless hospitalization worth up to Rs 5 lakh to poor people. These saw action against 23 hospitals out of 33 establishments that were subjected to random inspections. The hospitals penalized for frauds were concentrated in Raipur, Durg, and Bilaspur. Some of these included big corporate hospitals, but also others with bed capacities under 100. The charges against these hospitals included double billing or charging both the government and the patient for treatment, which is rampant in the state, apart from fake and inflated billing. Also, some hospitals were found conducting complex procedures when not required, showing ghost patients to raise claims, and trapping patients for unnecessary procedures through medical camps. The inspections followed inputs on fraud by the National Anti-Fraud Unit, a central agency running ABPMJ under the National Health Authority. The February crackdown put the spotlight on Chhattisgarh, standing out for not only the highest fund utilization but also private hospitals' fund misuse under ABPMJ. From ABPMJ's launch to mid-January 2025, out of fraudulent claims of Rs 562.2 crore for 2.7 lakh patient admissions nationwide, the state's hospitals logged Rs 120 crore claims, found non-admissible later for abuse, misuse, or incorrect entries. So at over 20%, Chhattisgarh recorded the second highest fraudulent claims after only one other state, Uttar Pradesh. Uttar Pradesh raised fraudulent claims of nearly Rs 139 crore. Madhya Pradesh, on the other hand, closely followed Chhattisgarh, raising fraudulent claims of roughly Rs 119 crore. Chhattisgarh has 1,661 hospitals impaneled under ABPMJ, the ninth highest number of hospitals impaneled in a state. Of that, 620 are private according to the National Health Authority figures, whereas the state government puts the number at 584. In the state, 4,000 to 5,000 daily admissions are registered under ABPMJ on an average, with hospitals claiming Rs 5 crore per day in total. Out of total 8.9 crore hospital admissions in India under the program, nearly 36 lakh have been registered in the state, which was once part of Madhya Pradesh. Overall, the funds spent yearly under the scheme in the state is staggering, around Rs 2,200 crore. In the state, the scheme is locally named as AB-PMJ Shaheed Veer Narayan Singh Ayushman Swasthya Yojana. The scheme covers nearly 90% of its estimated 3.25 crore population. This is due to the fact that the state also provides coverage to all with the ration cards, even though nearly 1 crore people who are not qualified based on their income levels are given coverage for only Rs 50,000. For beneficiaries in this category, the state alone bears the cost of the premium and hospitalization bills. But evidence so far suggests that the program is not leading to any meaningful impact on bringing down out-of-pocket expenditure on healthcare. Sometimes patients are asked to pay additional charges for the procedures they undergo. On other occasions, they are asked to pay for tests or medicines.
This is despite the fact that all these services are meant to be free under the ambitious health insurance scheme. We spoke to a patient who was undergoing medical management for acute dehydration in a not-for-profit hospital in Balod district. The patient was charged for various tests at a private medical college in Raipur earlier under the scheme. In case of violations of stipulated NHA guidelines, there are provisions for suspensions, blacklisting, and de-empanelment of hospitals, which can also face fines and legal actions. Of the 1,114 de-empaneled hospitals in the country so far, only 36 are in Chhattisgarh, despite its high share of fraudulent transactions. Of those, 33 had been de-empaneled in 2024-25. Also, despite fraudulent claims worth over rupees 120 crore detected here, the defaulters over the last 7 years have paid fines of only rupees 4.23 crore, with the collection highest in 2024-25 at rupees 1.27 crore. At one of the hospitals in Raipur against which action was taken, the inspection team found old patients with pain in limbs or other body parts wrongly hospitalized and moved to the ICU for photo ops before being shifted to the general wards. On the transaction management system, an app used for ABPMJ impaneled hospitals, the hospital showed the patients as critical. In most other hospitals, it was found that there were more patients shown registered as than actually hospitalized. Authorities also say that private hospitals in the state so far mostly had a free run, and even though hospitals deny wrongdoing, accusing the government of delaying the release of funds meant for treatment of patients. We talked to State Health Minister Shyam Bihari Jaiswal, who said that the government was now initiating measures to curb frauds by private health establishments. छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबों की संख्या है, मजदूरों का है, किसानों का है और ट्राइबल्स सबसे ज़्यादा हमारे राज्य में है औसत अनुपात में। और उसके अलावा जो भौगोलिक संरचना है छत्तीसगढ़ का, एक और बस्तर की जो दूरस्थ वनांचल क्षेत्र है, वहीं सरगुजा का जो उत्तर छत्तीसगढ़ है वो भी वनांचल है। ऐसे में आम जनता के लिए आयुष्मान कार्ड योजना जो एक वरदान के रूप में साबित हुई है यहाँ, और इस बात की खुशी है कि देश के प्रमुख राज्यों में सबसे प्रमुखता से आयुष्मान का उपयोग करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। और जैसा कि आपने बताया कि जो आयुष्मान में गड़बड़ी का भी मामला देश के दूसरे नंबर में छत्तीसगढ़ आया है, तो उसको हम लोग सतत रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उस दिशा में हमने लगभग 3 दर्जन सुपर हॉस्पिटलों में हमने जांच कराया, उसमें 12 को नोटिस दिया, 23 के ऊपर कार्रवाइयाँ किए, कुछ को सस्पेंड किए, कुछ को डी-इम्पेनल्ड किए, कुछ के ऊपर जुर्माना लगाया। तो इस प्रकार से हम लोग सतत रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभी आने वाले समय में इसको और अच्छे से कैसे कर पाएंगे, इसके लिए विभिन्न देश के राज्यों की जो आयुष्मान प्रणाली है उसको अध्ययन भी कर रहे हैं। और मैं अभी तमिलनाडु में जो मदुरई है वहाँ खुद भी गया था, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ के आयुष्मान की भी व्यवस्था दिखा। उसके साथ साथ अन्य विषयों पर भी मैं वहाँ पे चर्चा किया। तो छत्तीसगढ़ में एक तो हिस्ट्री रही है कि आपने पिछले जब से राज्य बना है तब से आपके बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हैं, तो शायद देश की किसी दूसरे राज्य में भी नहीं है, इतने ज़्यादा हैं। बहुत सारे स्कीम्स से जो अब अंदर आयुष्मान भारत के अंदर सब्ज्यूम हो गए। लेकिन दूसरी तरफ ये जो फ्रॉड का एक प्राइवेट हॉस्पिटल का, खास करके जो छोटे छोटे 10, 15, 20 बेड के हॉस्पिटल हैं, उनको भी आपने पैनल कर लेते हैं, तो वो जो है होस्ट पेशेंट्स या दिखाना कुछ और ट्रीटमेंट, उससे बढ़ा के पैसे ले लेना सरकार से, इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये जो सिस्टमिक इश्यूज़ हैं, इनको आप किस तरह से सॉल्व करने का सोच रहे हैं? देखिए, जो आपकी सोच है उस पर भी हम लोगों ने चिंतन किया है। जो छोटे हॉस्पिटल 10 बेड और 20 बेड वाले हैं, उनको इम्पेनल्ड करने का एक बड़ा कारण ये है कि हमारे जो दूरस्थ अंचल हैं, जैसे सरगुजा और बस्तर के जो ज़िले हैं,
इनमें बड़े हॉस्पिटल्स बहुतायत जिलों में नहीं हैं। नहीं है। और ऐसे छोटे छोटे हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों का सरल उपचार कैसे हो सके, उसके लिए हम लोग आयुष्मान में उसको इम्पेनल्ड किए हैं। और ये बात सही है कि कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके बारे में बराबर शिकायत भी आती रही हैं, तो सतत रूप से हम ऐसे हॉस्पिटलों पर जिला स्तर से भी कार्रवाई करा रहे हैं, स्टेट से भी कार्रवाई कर रहे हैं, और नियमित रूप से इन हॉस्पिटलों की मॉनिटरिंग करके हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार की फ्रॉड की गुंजाइश समाप्त हो और 0% फ्रॉड से हमारा ये आयुष्मान सिस्टम चले। एक जो कॉमन कंप्लेंट जो बहुत सारे पेशेंट्स देते हैं वो ये है कि जो वो आयुष्मान भारत के अंदर इलाज कराने के लिए जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल उनसे एक्स्ट्रा चार्ज भी ले लेते हैं। कुछ पैसे तो वो सरकार से ले रहे हैं और कुछ अलग से पेशेंट से भी ले रहे हैं। वो एक कॉमन कंप्लेंट है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। उसपे क्या आप कर रहे हैं, उसको लेके आपके क्या कॉग्निजेंस ने आप पे लिया है और उसको लेके क्या करेंगे? देखिए, वैसे तो जो एक्स्ट्रा पैसा लेने वाले हॉस्पिटल्स हैं, कोई भी व्यक्ति यदि कंप्लेंट करता है तो उसमें कार्रवाई के प्रावधान है। परंतु ये बात सही है कि सभी पेशेंट जो है कंप्लेंट नहीं करते, और ये प्रैक्टिकली रूप से देखा जा सकता है, और नेचुरल सी बात है कि सबके सब लोग तो इलाज के बाद कंप्लेंट करेंगे नहीं। तो उसके लिए हम जल्द ही हमारी तैयारी हो चुकी है, या तो हम उसमें एक टोल फ्री नंबर हर हॉस्पिटल में और सभी जो यूजर्स हैं उनको प्रोवाइड कराएंगे कि वो इलाज के बाद वो फ़ोन करें, और जब तक उनकी फीडबैक नहीं आएगी तब तक हम उनके पैकेज को ओके नहीं करेंगे। तो एक्चुअल में जब भर्ती रहेगा उस समय तो मरीज किसी भी स्थिति में हॉस्पिटल के खिलाफ बोलेगा नहीं, लेकिन जब उसकी छुट्टी हो जाएगी तो मरीज स्वतंत्र हो जाएगा और अपनी बात को, हो सकता है 100% लोग ना बोलें, परंतु 50%, 60%, 80% लोग सही चीज़ को जरूर बताएंगे कि इनके पैसे लगे हैं। तो ऐसे स्थिति में हम उनके क्लेम को रिजेक्ट करेंगे, ऐसी हम सिस्टम बना रहे हैं। तो अभी तो एनएचए जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है वो कहता है कि एक फीडबैक लेने का उनका सिस्टम है, लेकिन क्या वो छत्तीसगढ़ में ठीक से इम्प्लीमेंटेड नहीं है? अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है वो सिस्टम। आप वो कह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम लेके आएंगे, क्योंकि कि वो उसको पैकेज के साथ या उसको क्लेम अप्रूवल के साथ उसको लिंक करने का आप सोच रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये प्रावधान फीडबैक लेने का तो भारत सरकार का है इसमें, और फीडबैक लेते भी रहते हैं, उससे ही वो जो ट्रैक कर पाते हैं। कई केसेस जो केंद्र से भी हमको भेजते हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है, लेकिन इसको मैंडेटरी करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं ताकि गड़बड़ी की गुंजाइश लगभग खत्म हो। बताओ। Centrally maintained by the NHA, the statistics list hemodialysis, COVID-19 screening, acute febrile illness, a specific cataract removal procedure, and acute gastroenteritis with moderate dehydration as the top procedures availed under the scheme across India. In Chhattisgarh, enteric fever or typhoid, which is difficult to audit medically, is among the most common conditions that private hospitals have raised claims for since 2018, right after acute gastroenteritis with several dehydration. Then there are packages for vaginal deliveries, acute febrile illness, and acute gastroenteritis with moderate dehydration. Whereas the average claim of hospitalization nationally is roughly 13,000, it stands out at rupees 10,000 in Chhattisgarh. It suggests that most beneficiaries avail the scheme only for minor procedures. And in cities where the private hospitals are concentrated, unethical practices are rampant. But as top functionaries in the government suggest, there are considerations underway to check unethical and fraudulent practices. These include making patient feedback mandatory for approval of every claim raised by a private hospital and shifting to a hybrid model of the scheme from the current trust model. Wrongdoings by private hospitals under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Aarogya Yojana is not really a new thing. What is new, at least in Chhattisgarh, is that some initiatives are being taken by the state government in order to reduce corruption by the private hospitals. What the authorities are saying is that patient feedback will be mandatory before making payments to private hospitals, and also they'll shift to hybrid model
It remains to be seen whether it actually reduces the abuse and misuse under Ayushman Bharat in the state. This is Sumi Sukanya Datta for The Print outside SR Hospital in Durg district, Chhattisgarh.